सबसे छोटा राधा माधव गाते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना यशोदानंदना व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना गिरिवर यशोदानंदना व्रज जनरंजना, यशोदानंदना व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक जगच्चार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस सभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ताई गौर प्रेमानंद। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. So we'll recite the prayers and discuss verse number 20 and 21. 19 verses we'll recite together from the first verse. There is one confusion in this ye wala jo hai. Which is the first one? Shri Varadraj Prabhuji is the first one? Huh? Yes, 8.3 is Shri Vyasa Uvacha, Varadraj Uvacha, and 8.3.2 is Gajendra Uvacha. But Gajendra Moksha Stotra starts from 2 only. Yeah, that is there, but it is isko bhi one likha hai inhone. Isko one likha hai. That's why I used to pray every time from this. Shri Varadraj Uvacha evam vyavasito buddhya samadhaya manoradhi jape paramam japyam ragjanmani anushikhitam. Shri Gajendra Uvacha Om Namo Bhagavate Tasmai Eta Chidatmakam Pareshaya Dhibhimahi Yasmin Idam Yatashedam Yenedam Ya Idam Swayam Yosmat Parasmascha Paras Tam Prapadye Swayam Bhuvam Yasyatmanidam Nijamayayarpitam Pachit Vibhatam Pachatat Tirohitam Avedradrak Sakshubhayam Tadikshate
स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्त आसीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिराजति विभो देवार्षया पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनया सुसाधवः चरन्त्यलोकाव्रतमव्रनं वने भूतात्मभूतः सुरदः समे गति विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायया स्वमायया ताम् अनुकालयति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्यता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय ये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टै सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्निश्चन्नचिदुष्पपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानस विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्पपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दिशे भगवते गते नमस्ते मदाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभीश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः कामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे अभद्रदयो विमोक्षणम्. So what do you remember from yesterday's, last time's discussions on this 19th verse? After worshipping the Supreme Personality, those who are interested in the four principles
of region economic developments and gratification and liberation obtained from him what they desire. What then is to be said of the other benedictions? Indeed, sometimes the Lord gives a spiritual body to such ambitious worshippers. May that Supreme Personality of Godhead, who is unlimitedly merciful, bestow upon me the benediction of liberation from this present danger from the materialistic way of life. Yes, Prabhus, what do you remember from this verse? Huh? Bolo? We had discussed about the Lord being something like the Father. What was that concept? Lord is most what we can say, caring father because he does not fulfill each and every desire. I mean, Jiva is actually adamant regarding going away from Lord. So those desires Lord fulfill will like it will give you analogy regarding it. Just like a child who is demanding many things from his father, but there are some things for which child is very adamant for that Lord immediately fulfills some sanctions, basically some desires. Yeah, more than that, the discussion was little more towards being loving father, which he remembers the desires. We also had discussion about Guru Maharaj. What was that discussion? Yes, example was of Dhruva Maharaj. What was that? So Guru Maharaj initially was desiring for kingdom which is greater than his father. But after when he saw Lord, instantly all his desire gone, and he just, I mean, he was just thinking like, I don't want anything because I got your Yes, I got you only now. Yes, but what Lord did, ठीक है नहीं चाहिए ना तुमको, ठीक है रहने दो. He did like that. What he did? He fulfilled his desire. ultimately mercy. We may forget our desire. One, we may sometimes change our desires. We may sometimes forget our desires, and we may sometimes don't want our desires after coming to Krishna consciousness, something like Dhruva Maharaj. But what the Lord does from his side, he fulfills that desire. Remembering that desire was made by my devotee, he fulfills that desire. Yes. And we saw the exam. What were the two prayers? That whatever desire, like whatever you feel is good for me, that you do. This is one important desire, important prayer which is made to the Lord regularly. Whatever is best. And what was the logic behind this? Why to offer? What is the basis or thought process behind this particular prayer? Because we may think in context of what is prayers, and then we may ask for something which is harmful for us in the long run, which is not shreyas. So, but Lord knows the ultimate. That is why we should pray for what Lord feels good for us. Yeah, more than the discussion, it was more than this, and that it may be harmful to us when we pray something wrong, this, that. More than that is that being a father, he knows more better than us. Every time it's like that only, even in the case of material
Only problem is that there is too much of imposition. So the Lord doesn't do. Here in this material world, Father knows more better than the Son what is best for him. Only thing is that there is too much of imposition on him. यही करना है तू. There is no freedom. But that's not the case with the Lord. He sees, अरे ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, सस्ते में कटाओ इसको. Yeah. Yes, online members want to share something. You can unmute yourself and speak something if you want to share something. We'll go to the verse number. Who is it? Okay. इधर से नहीं है ना? So this is verse number 20th and 21st together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनन्द समुद्रमग्ना समक्षरं ब्रह्म परं परेश अव्यक्तम् आध्यात्मिकं योगम् अव्ययम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मम् इवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनन्द समुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकं योगं गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मम् इवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनन्द समुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगं गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे So Gajendra is prayer, ekantino yasyana kanchanartham vanchanti evai bhagavat prapanna. So the devotees who are fully surrendered, doesn't want anything, na kanchanartham, doesn't want anything to them. Vanchanti bhagavat prapanna, want to surrender only to the Lord. So what they do? Atyadbhutam tvat charitam sumangalam.
They keep on discussing your Adbhuta Charitra. Gayant Ananda Samudramagna. Then become extremely happy in discussing the um, wonderful activities of yours. And then he expresses his regret that, but what can I do? I'm not desiring anything. I want my life to be saved at this point of time. Translation. Unlike devotees who have no desire other than to serve the Lord, worship Him in full surrender, and always hear and chant about His activities, which are most wonderful and auspicious. Thus, they always merge in an ocean of transcendental bliss. Such devotees never ask the Lord for any benediction. I, however, am in a danger. Thus, I pray to that Supreme Personality of Godhead who is eternally existing, who is invisible, who is the Lord of all the great personalities, such as Brahma, and who is available only by the transcendental Bhakti Yoga. Being extremely subtle, he is beyond the reach of my senses and transcendental to the external realizations. He is unlimited. He is the original cause and he is completely full in everything. I offer my obeisances unto him. Purport. Anybody want to read purport? Who is there online? Amantu, you like to read? Are you happy to read? Yes, Prabhuji. Yeah, I'm most hearing your voice after so long time. That's why I would want you to read. Yes, Prabhuji. So I'll read the purport. Oh, yes. Purport. Some men within this material world. No, not this one. Sorry. This is 21 and 21, 20 and 21. Yes, Prabhuji. So starts with this verse. अन्नभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादिनिवृतं अनुकूलेन कृष्णासु शीलनं भक्तिरुत्तमा. Bhakti Rasamrita 1.1.11. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. Unalloyed devotees have nothing to ask from the Supreme Personality of Godhead, but Gajendra, the king of the elephants, was circumstantially asking for an immediate benediction because he had no other way to be rescued. Sometimes, when there is no alternative, a pure devotee, being fully dependent on the mercy of the Supreme Lord, prays for some benediction. But in such a prayer, there is also regret. One who always hears and chants about the transcendental pastimes of the Lord is always situated on the platform on which he has nothing to ask in terms of material benefits. Unless one is a completely pure devotee, one cannot enjoy the transcendental bliss derived from chanting and dancing in the ecstasy of the Sankirtan movement. Such ecstasy is not possible for an ordinary devotee. Lord Chaitanya Mahaprabhu showed us how one can enjoy transcendental bliss simply by chanting, hearing, and dancing in ecstasy. This is Bhakti Yoga. Therefore, the king of the elephants, Gajendra, said, Adhyatmika Yoga Gamyam, indicating that unless one is situated on the transcendental platform, one cannot approach the Supreme Lord. The benediction of being able to approach the Lord can be achieved after many, many births. Yet, Sri Chaitanya Mahaprabhu has awarded his benediction to everyone, even to the fallen souls who have no heritage of anything in spiritual life. That is actually being seen in the Krishna consciousness movement. Therefore, the path of Bhakti Yoga is the spotless process by which to approach the Supreme Personality of Godhead. Bhaktya, Bhaktyaham Ekaya Grahaya.
Only through devotional service can one approach the Supreme Lord. The Lord says in Bhagavad Gita, Maya Saktam Anapata Yogam Yunjam Madashraya It's 9 o'clock. Samshayam Samagram Mam Yatha Gyasasi. Now here, O son of Pritha, by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you know me in full, free from doubt. Simply by being attached to Krishna consciousness and by thinking of the lotus feet of Krishna constantly, one can fully understand the supreme personality of Godhead without a doubt. स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Vashish Prabhu, Aman Prabhu. Hare Thank you Krishna, for, Guru. thank you for coming, joining. You have become regular, sincere, consistent members for the Saturday morning class. Thank you for continuing. So this is another prayer of Gajendra, where he is expressing that he is not following a very high standard of not asking anything from the Lord. And Prabhupada writes in the purport that he is regretting. So Prabhupada writes in the purport that sometimes a pure devotee of the Lord may ask him something. Actually, he doesn't ask anything. Why he doesn't ask anything? Though we saw that last time. Why he doesn't ask anything? He doesn't ask anything because already the Lord has given everything. It's not that something is not given. Everything is there already. Second reason why he doesn't ask anything is that he knows that whatever the Lord wants to give, he will give anyway, being a father. So these were the things. So he doesn't ask. But sometimes in the desperate condition, there some difficulties are there. Sometimes that time he asks. And then Prabhupada aptly quotes the verse of Nectar of Devotion. Anya vilashita shunyam jnana karma adi anavritam anukulena krishnanu shriranam bhaktiruttama. So one of our devotee was sharing that if you ask the people, what is bhakti?
especially those who have not studied Bhakti Rasamrita Sindhu, don't come in Parampara and all. If you ask them what is Bhakti, what is Bhakti? कुछ तो करो, थोड़ा नाचो गाओ, कुछ तो करो. Bhakti is undefined. I mean, that's why the parampara is so extremely wonderful. And अभी तो 3 दिन सेमिनार हुआ इसी वर्ष के ऊपर. I am unfortunate I couldn't attend. 3 days, 2 hours, 6 hours discussion only on this particular verse. It's so deep and so important verse. Very important verse. To the extent we understand this one, we can understand what is devotional service is. Sometimes we may not be able to perceive what is devotional service. This is devotional service. Anya Abhilashita Shunyam. Many of you must have studied this verse in Bhakti Shastri. So there is an elaborate description on this verse for sure. Because it's a very prominent verse in our Bhakti Shastras. So this is the first time it is described in our scriptures. This is the first time where the definition of bhakti is formally presented. What is bhakti? So Krishna also has described what is bhakti. Man mana bhav mad bhakto madhyajimam namaskuru. This is bhakti. Offer obeisances to me, chant my name, remember me, engage your mind in me. What is the problem in this definition of bhakti? Krishna has defined bhakti, na? What is the why this particular definition which is given by Rupa Goswami is considered the first time formulation of definition of the bhakti properly? Krishna has spoken already. Now what is the problem? Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam braja ham tvam sarva papi. What is the problem? Why formalizing here? What is your guesswork? If no bona fide reason, then at least some guess, spiritual, what is that? Philosophical speculation, that is allowed. Why you consider that this particular verse is the first formalization of bhakti? Already there are so much thing on bhakti. Bhaktya mam abhijanati. Krishna already has spoken. Okay. Bhakti is there, but along with that, other inclinations are also there. Jnana, karma, that he is cutting off. No anya abhilasha. More abhilash, big like one. Anya abhilash ita. Ita means he says anya abhilasha, but there may be sometimes abhilasha also, like for protection, like Draupadi prayed for protection or Gajendra prayed for protection, but it is not some material thing. No, it's material but allowed. Material but spiritual. Material but spiritual. So it's a first time formalization of proper definition of bhakti is because, okay, Krishna said, engage your mind in me, surrender, offer obeisances to me, chant my name. But why this guy is doing this, we don't know. कुछ होगा झोल, कुछ तो गड़बड़ करके आया होगा अभी बचाने के लिए. भगवान बचाओ बचाओ दंडवत कर रहा है, ये कर रहा है. अभी आपको गोवर्धन के आजू बाजू में दंडवती परिक्रमा करने वाले लोग हैं, हमारे होगा भी नहीं, आप कर नहीं तो हम करते करते हम चले जाएंगे भगवत धाम. दंडवती परिक्रमा कितना 21 किलोमीटर है. दंडवत करो, खड़ा आगे का पीछे रखो, वहां पे पैर रखो आगे. अरे पागल हो जाएंगे हम लोग. राइट? मोर सरेंडर, मोर भक्ति देन यू. What's the problem? There is one problem. Why is doing this? इतना भक्ति कहाँ से आ गया एकदम से? कहाँ से आ गया भैया? कुछ तो झोल है, कुछ तो चाहिए बेचारे को, है कि नहीं? मन्मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु. बोल रहे क्या? Yes, Aman, you want to say something? So, I was saying that first time it is mentioned what not to do also. Yes. He describes what not to do also. Krishna is describing, ठीक है ये करो, थोड़ा नाम ले लो, दंडवत करो. So he is not telling कौन से भाव में करो, कब करो. लोग कुछ तो भी करते रहते, हम बोलते हैं हम भक्ति कर रहे हैं.
So anya abhilashita shunyam jnana karmadhi anavritam. So there is a very इसके ऊपर तो इतना डिस्कशन हुआ है कि how Rupa Goswami so precisely, so clearly, so perfectly has described bhakti. And then Prabhupada takes देखो when Gajendra is praying for his protection, somebody में से क्या है, आपने बोला भगवान कुछ मांगो मत और ये तो मांग रहे बचाओ मेरे को बोल के, ये कैसे हो गया? But according to the pure devotional service, that is right. Anya, there is a discussion where that describes it's not sarva abhilashita shunya. It is not described as कुछ नहीं करना है, पत्थर की तरह कुछ बोलने का नहीं भगवान. सर्वा अभिलाषिता शून्यम, no, it's अन्य अभिलाषिता शून्यम. अन्य अभिलाषिता मतलब there are some abhilashas, ichhas, desires which should be expressed to the Lord, and in that this protection for the life is bona fide. This is required. If somebody is going to go to the next near to death, well, is knowing now he is going to die, he has, or his near and dear ones have the full right to take shelter of the Lord and pray for the protection, and that is pure devotional service. So that small what do you call it, a gap, a freedom is there, a window is there of anya abhilashita. It is not sarva abhilashita, it's anya abhilashita, where the Lord is the only solution. Prabhupada writes the purport, है कि नहीं? आपका पेट दुख रहा है तो भगवान को मत बुलाया, भगवान खा नहीं पा रहा हूँ मेरा पेट ठीक कर दो. नहीं, that is not allowed. इतना अच्छा पीस बनाया मेरा पेट खराब है. So that doesn't come. For that doctor is available. Is the stomach ache is the only Lord can solve this? नहीं, वो बहुत सारे लोग इधर उधर लोग हैं. हाँ, कुछ जमाल गोटा ले लो, your stomach will be emptied. That is also there. It's not that for this particular purpose you have to go to the Lord or something like that, right? But there are some situations which we cannot handle, other people cannot handle, and these are very dangerous also at the same time to us. At that time, if you remember, very beautiful pastime, Bhaktivinoda Thakur's life is there described in so many beautiful ways, how he was so determined in performing devotional service. But at the same time, it is described that disease was a constant companion in his life. कुछ ना कुछ उनको तकलीफ रहता था, heavy, कुछ dysentery होगा, fever आएगा, कुछ तो होगा. So one time he was in good health. He goes to Vrindavan, and then he becomes sick there, heavily sick. Then he offers the prayer to Krishna. He said, you do one small favor to me. After my Vrindavan Yatra is over, I'll go back to my normal place. So you shift this disease that time. And now you make me happy. Now you make me healthy. So that I have come on Vrindavan to pray to you, to take darshan, to do parikrama and all these things. So I'm not saying remove my disease, but you shift the time of disease. अभी 4-5 दिन में इधर वृंदावन में परिक्रमा कर रहा हूँ, तब मेरे को हेल्दी रखो. उसके बाद तो चला गया तुरंत डिसीज. And then he did all the darshans, parikrama. He went back and then he started. So now there is no question what Bhaktivinoda Thakur did was out of the circle of pure devotion service. No, whatever he did, small, big, it can look from any direction, some speck. आपको कुछ चश्मा पहना है आपने की मटेरियल दिख सकता है, वो कुछ मटेरियल नहीं. There is no material in Bhaktivinoda Thakur's life. So when he is praying like this, should not be considered materialist. That also, and then it falls into this category. If you have a severe disease, can a doctor will do in just few hours? It will make it normal? नहीं, ये डॉक्टर का भी काम नहीं. वो भी बोलेगा इतना डोज लो 15 दिन का, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है.
फिर डोज चेंज करके देंगे, नहीं हुआ तो अरे क्या लगा के रखा, तब तो वृंदावन यात्रा खत्म हो जाएगी, तुम क्या करोगे? Right. Of course, the people should also know what the Lord can do and what the others can do. Sometimes what happens, everything goes to Lord only. आप ही करो और कोई नहीं कर सकता. Not like that. So in the prayer is a very beautiful thing. I made some the notes which Prabhupada highlights here. That a pure devotee prays to the Lord, a fully 100% pure devotee of the Lord offers the prayers to Lord. Yes, he offers the prayers to Lord. He is not bereft of the prayers. It's not shunya prayers. He's anya prayers. So he doesn't offer to the prayers to the Lord for some here and there some trivial things which are common to the people in the world. And हिरण्यकशिपु की तरह कभी मांगता नहीं भगवान को, मेरे को छुटकारा दे दो मृत्यु से, ऐसे वाले प्रेयर करने का नहीं, और वो फुलफिल भी नहीं होने वाले. भगवान ऐसे पागल नहीं है कि बोला हाँ ठीक है तथास्तु, ऐसे बोलने में नहीं होना. So these are the prayers which cannot be, or some material prayers also cannot be there. मार्क बढ़ाओ मेरे, ये करो वो करो, मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, अप्रेजल दे दो ज़्यादा परसेंटेज का, मेरे टीम लीडर को दिमाग पे थोड़ा बुद्धि डालो, मेरा अच्छा वो एनालिसिस करे, ये वो. So like that, Prabhupada writes that I thank Lord Krishna to give a good intelligence to Sumati Morarji to give me a ticket. And the devotee was thinking, Hare, he's not thanking Sumati Morarji, he's thanking the Lord. Because the Lord gave some indication to Sumati Morarji to give the ticket, and that's how she gave. So how the pure devotee sees the Lord around that time, it is described. So the devotee prays to the Lord, but it doesn't pray for something very basic material, which doesn't make any sense in this world. Even if you have good marks, it doesn't guarantee that you will get job. है कि नहीं? तो मांगना है तो क्या मांग के भी फायदा नहीं हो एक्स्ट्रा मार्क, like that. So some of the things in this material world will people pray is of no use. उसका कुछ फायदा नहीं हो, बेचारे desperate होके प्रार्थना करते रहते, वो पागल लोग हैं. They are not pure devotees. They use the Lord as use and throw. प्रे करेंगे, मिल गया, भूल जाएंगे, फिर जाएंगे, कुछ चाहिए फिर मिला मांगेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर आएंगे. अब भक्त ऐसा नहीं करता है. So Anyabhilashita, Prabhupada here elaborates, when there is no option. And now Gajendra, who can save Gajendra? Already so everybody has tried. इसने छोड़ा है क्या अभी तक? सब उसके relatives ये वो सब कर दिया उन लोगों ने. So nothing is possible. Who will save it? How many hours, years are over? When he is praying, how many years are over? 1,000 years are over. After trying 1,000 years in the battle, now can you understand who can save you? The Lord only can save. And that time it is absolutely fine. So when our relatives, when our near and dear ones, or we are in extreme danger condition, which cannot be, that time, if you see a beautiful example of this, even more higher than this is the example of Srila Prabhupada. What he did, when he was sick, when he was about to leave, even Kaviraj one who is treating him, the last one, there are many in that 1 year of time, 1-2 year of time. But the last one, he tells Tamal Krishna Maharaj, अरे जाने दो यार उनको, मत करो, बस हो गया अभी, इतनी बार नीचे खींचते रहते हो, हर बार तबीयत खराब हो गया, वो जाके रोते थे, प्रभुपाद हमको छोड़ के मत जाओ आप, अभी तो हमारा सिर्फ 10 साल हुआ है, हम अभी कैसे चलाएंगे, आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया आपने. फिर प्रभुपाद को लगता था ठीक है, मैं प्रभुपाद बोलते ठीक है नहीं जाऊंगा. And then it goes extended for 2-3 months again. Again he becomes extremely sick, about to just leave, and all of them are coming and crying. And Prabhupada said, okay, you go to the deities, 24 hours कीर्तन करो, 24 घंटा, और भगवान को बोलो, एक बार बोले भगवान को बोलो कि मेरे गुरुजी के गुरुजी ने जो मिशन दिया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा रुको, इतना जल्दी मत लेके जाओ. ये वो प्रेयर किया. फिर दूसरी बार उन्होंने बोला कि आप भगवान के पास जाओ
और भगवान को बोलो यदि अगर आपको लगता है कि प्रभुपाद को और ज़्यादा लाइफ रहना चाहिए, ऐसा आपको अगर लगता है तो रखो प्रभु। ऐसे कुछ तो प्रेयर प्रभुपाद बोलते थे इन लोगों को, और वो जाके पूरा दुनिया भर प्रेयर करते, सारे मंदिर में 24 घंटा प्रेयर चल रहा। फिर भगवान भी परेशान हो जाते थे, बोले ठीक है जाने दो, रहने दो, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। लास्ट टाइम व्हेन ही बिकम सिक अगेन दिस डिवोटीज केम। कविराज बोला बस वो कितना होगा, तरफ तकलीफ हो गया, अभी छोड़ो उनको, जाने दो, बस हो गया, मत पूछो अभी। दैट टाइम दे वर लिटिल मोर sober and mature. ठीक है, at one point of time he has to go only, it's not that he's going to stay, he has taught. But all these prayers can be demonstrated very nicely that it is in the category of pure devotion service, where you understand we Lord only can do something, one, and second one is it is not some trivial one, it is just, it's a prayer related to life and death. कल आपका एक्सीडेंट हो रहा है, आप हेलीकॉप्टर से गिर गए, अभी आपका पैराशूट में नीचे उतर रहे, पता नहीं नीचे जमीन होगा, पानी होगा, क्या होगा, कहाँ पे गिर, किसके ऊपर गिरने वाले हो। पैराशूट से उतरने के बाद थोड़ी गारंटी थोड़ी है कि नीचे आपको रिसीव करने के लिए फूल हार लेके लोग खड़े होके बोल, तो कहाँ गिरेगा पता नहीं। तो इन दैट टाइम यू कैन श्योरली प्रे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। नहीं प्रेयर करने के लिए नहीं बोला है, मटेरियल बॉडी है, ऐसा नहीं है। मटेरियल बॉडी थोड़ी ना कोई टाटा बिरला मैन्युफैक्चर करके आपको दे देंगे, वो नहीं हो सकता है। आपकी कार टूट गई, भेज दो उसको, फेंक दो, भगवान को मत बोलो इसको जोड़ के दे दो बोल। बट व्हेन देयर कम्स टू लाइफ, इट इज द प्रेयर टू द लॉर्ड ओनली। सो दिस इज इलैबोरेटली डिस्क्राइब्ड, ही वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ द्रौपदी। द्रौपदी इज प्योर डिवोटी, यस शी इज वेरी प्योर डिवोटी। So that's why these prayers are considered very. And one more prayer, one should not pray for oneself, but one should pray for others. It is very important. That also is the part of a very sincere devotee's prayers to the Lord. Because यहाँ पे है ना, in this verse describes one should not have motivated prayers for oneself, for one's benefit. But if some devotee is taking up Krishna consciousness and is practicing now, so one should protect him by offering a regular prayer for his progress and protection in Krishna consciousness. When what person will be blooped from this process is not known, it's a very difficult process. शूरस्य धारा निशिता दुरत्य, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितना सारा उल्टा पुल्टा हो गया हमारी दुनिया में। कुछ लोग संप्रदाय चेंज करके बैठे हैं, कुछ लोग वही तक गए, अरे कितना ये लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बहुत डोनेशन मांग, तो भी उल्टा मेरे को प्रसाद नहीं मिला फेस्टिवल के दिन, इतना डोनेशन देने के बाद। अलग अलग रीजन से लोग भटके हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है कितना दिन हो गया यही सिखा रहे हैं लोग, है कि नहीं, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं आगे कहाँ बढ़ना है, भगवान कृष्ण के आगे क्या बढ़ना है उनको। कुछ लोग राधा के पास जा रहे, कुछ इधर के पास जा रहे, कुछ भी करते हो, जब मन में आया जो करते रहते। सो who will protect these people? There is one very special protection. Those who are bringing them in Krishna consciousness, those who are playing the role of their guides, caretakers, mentors, should offer the prayer continuously, regularly, consistently, should offer the prayers to about for them, for their protection. भगवान इसको सही रास्ते पे ही चलाना, इधर उधर मत भटकने देना, इसको दिमाग इधर उधर जा रहा है तो उसको दिखाना ये गलत है, यही रास्ता सही है, अंदर से कन्विक्शन आप उसको प्रदान करो। ये सारा किसका काम है? ये सारा गुरु का काम है, ये सारा मेंटर का काम है, ये सारा काउंसलर का काम है। ऐसा नहीं कि बस अपना हार फूल गिफ्ट चॉकलेट ये वो प्रसाद खाते रहो और बस कुछ नहीं। बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। वो when there was initiation time and people were asking महाराज क्यों जल्दी जल्दी आप इनिशिएशन इतना टाइम क्यों लगाते हो? जैसे आप किसी का हिम्मत नहीं बोलने का, मगर कब कुछ लोग परेशान होकर बोल देते हैं कभी कभी। महाराज बोले आई मेडिटेट ऑन दैट पर्सन डेज टुगेदर, कभी कभी महीना भर उसके ऊपर ध्यान करता हूँ मैं कि इसको
कुछ चल रहा होगा, लॉर्ड इंडिकेट्स टू दैट गुरु व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ हिज डिसाइपल। मतलब दो घंटे 4 घंटे उसके बाद मेडिटेट करना तो दीक्षा देने के पहले, और बोलते हैं दीक्षा के टाइम में मैं अपने आप को दे देता हूँ उस व्यक्ति को। ऐसा कितनी बार बोला है महाराज। बोले अभी बस आई हैव जस्ट गिवन माय होल एग्जिस्टेंस टू हिम, मगर उसके लिए अभी पूरा सिस्टम बनाया है। काउंसलर सिस्टम क्या है? काउंसलर सिस्टम, काउंसलर सिस्टम कुछ वो नहीं है, क्या बोलते हैं, नियम आग्रह नहीं है। हमारे पास रहना है तो काउंसलर सिस्टम में रहना पड़ेगा, इधर उधर जाने, ऐसा नहीं है। वो प्रोटेक्शन शील्ड है, वो गुरु ने क्रिएट किया है आपके आजू बाजू में, अपने मेहनत से क्रिएट किया है वो। काउंसलर किसी को भी काउंसलर नहीं बना देते हैं, बन जाओ तुम कुछ काम नहीं। उसका गुण देखते हैं, वर्ण देखते हैं, भैया है कि दिमाग है कि नहीं है कि नहीं, अपने बारे में सोचता है कि दूसरे के बारे में भी सोचता है। अपने बारे में सोचने वाले को काउंसलर बना के कैसे फायदा जाएगा? उसको दिन रात दूसरे का बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके कोई होएगा। So one devotee was in one country and his initiation was recommended everything, but Maharaj was not giving it. And then he was asked, why you are not giving that devotee? He said, अरे उसका प्रोटेक्शन सिस्टम कहाँ है? उस देश में कोई है ही नहीं है, तो अकेला पड़ा है उधर। आप दीक्षा जो कि मुक्त हो जाओगे, पता नहीं कल जप करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं कल क्या खाएगा, क्या पता है कि नहीं। वो काउंसलर देखते रहता है, कम से कम वीक में एक बार तो देखते रहता है। आता है तो उसके मुखड़े पे समझ में आता है कि सिंसियरली भक्ति करके जो आता है काउंसलिंग 7 दिन के बाद मिलता है, वो अपना खुशी से मिलता है, मुंह दिखाने के लिए तो उसको तकलीफ नहीं होता है। कुछ गड़बड़ किया होगा सोचो, एक तो गायब हो जाता है वो, बोले नहीं यार आज काउंसलर मीटिंग को नहीं जाता हूँ, कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं अभी, है कि नहीं। आप गड़बड़ करो, मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो महाराज उसको दे, महाराज बोले तुम देश चेंज करो, तुम्हारा जॉब को शिफ्ट करो, जहाँ कम्युनिटी है, डिवोटीज है, जिनके आजू बाजू में तुम रहोगे, वो तुमको देखते रहेंगे। आप किस किस को देखते रहे? 10,000 लोगों को दीक्षा भी देना है, किस किस के पीछे भागेंगे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। So he is praying that he should be in a good association. He is praying that, and not just praying, he is making some practical system also by which he will be protected in his devotional service. So the point is very important. Apart from the prayers for our critical stages, there are opportunities for a devotee to pray to the Lord. कुछ प्रेयर नहीं करना है, इसको भक्ति कहते क्या? नहीं, Vandanam is a prayer, is one of the most important anga of a devotional service out of the 9 angas. But what should we pray? मेरे को अभी मैं अपने बारे में बता नहीं रहा हूँ, अगर मेरे को याद है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमारे प्रार्थना से किसी दूसरे डिवोटी के जीवन में जो प्रॉब्लम आने वाले हैं भक्ति से बाहर निकाल जाने के लिए, वो कम हो जाते हैं या भगवान नलिफाई करते हैं उसको। एंड somehow the other Lord protects. This concept is there in many places described in Bhaktivinoda Thakur's prayer also that describes. I described that prayer in 1 or 2 sessions before. बताओ क्या प्रेयर है वो? Last session में बोला था। हाँ, I think last session only. First point is second is कि भगवान जो भी लोग मुझे भक्ति से दूर न जाने देना या No, not that. I am saying by the prayers of another devotee, the devotee for whom the prayers are made is protected by the Lord. This is being described in our scriptures. And even Bhaktivinoda Thakur's prayer also. Vaishnavera avedane Krishna dayamay yehena pamara prati hayena sadaya. You not heard this bhajan? A very beautiful bhajan. Vaishnavera avedani. By the prayers of Avedan means निवेदन आ गया, रिक्वेस्ट, उसका क्या बोलते हैं, अपील आ गया। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, भगवान बहुत, अभी भैया भगवान दयामय है और दयामय हो जाता है। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय हे न पामर प्रति, that fallen devotee, towards that devotee
होए न सदा, होए न सदाए. Become Krishna becomes very mild. Krishna becomes very big-hearted when the devotee offers the prayers. That's why वो डॉक्टर था ना, वो अमेरिका में, वो प्रभुपाद को ये लोग ट्रीटमेंट कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, and nothing is happening. The doctor comes and tells Prabhupada, you are praying too intensely, reduce. आप बहुत डेस्परेट हो गए लोगों को बचाने के बारे में, बहुत ज्यादा तीव्र प्रेयर कर रहे हो, आप थोड़ा शांति रखो, थोड़ा चलो. आप दिन भर एक जगह पे बैठ के भगवान को पूरे हिला रहे हो, बचाओ इन लोगों को, बचाओ बचाओ बचाओ. सब पूरा दुनिया भर ये चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को फैलाओ. मैं मतलब ऐसा प्रार्थना, इंटेंस प्रार्थना चल रहा है, उसकी वजह से आप लोगों को पता नहीं, मेरे को कितना पता है, बहुत तीव्रता से प्रार्थना करते ना, हमारा तबियत खराब हो जाता है, उसका अच्छा हो जाता है. हमारा खराब. If you are praying very intensely, first of all that experience has to be there that we have prayed for somebody intensely. हमारे बारे में इंटेंसली प्रार्थना करके हमारा तबियत खराब नहीं होता है, हमारा तबियत अच्छा हो जाता है, इनकेस भगवान को लगा तो ठीक. मगर दूसरों के बारे में इंटेंसली प्रेयर करने से हमारा तबियत खराब होता है, इसलिए गुरु लोगों का तबियत खराब होता है, क्योंकि दूसरों के बारे, उनके बारे में प्रेयर प्रार्थना नहीं करते वो लोग, दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं. एक कारण बताएं, इतना भयंकर कलयुग चल रहा है, इट इज मैसिव कलयुग. स्टिल आवर मूवमेंट इज गोइंग ऑन ना, रोज दीक्षा हो रहा है, रोज नए नए लोग आ रहे हैं, यंग लोग आते हैं. सबसे ज्यादा फॉल डाउन होने का चांस कहाँ रहता है, यंग एज में रहता है. उसमें तो हम भर भर के ला रहे लोगों को, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग. तो वहां पे एक डिवोटी का एनालिसिस बोले, इतना प्रार्थना किया है प्रभुपाद ने, अगले 10,000 साल के जो लोग आने वाले वो आते रहे, अपना उद्धार करते रहे. हमारा तो प्रार्थना कर ही दिया उन्होंने, हमारे लिए तो गुरुजी भी लगे, सब लोग लगे. बट ही हैज प्रेड सो मच टू कृष्णा, कृष्णा इज ऑब्लाइज्ड टू नाउ. अभी वो वचन में बंध गए भगवान, बोले ठीक है मैं 10,000 साल में ख्याल रखता हूँ, तुम शांति रखो बस. तो दैट्स व्हाई द डॉक्टर टोल्ड हिम, अरे थोड़ा तो चलो, तुम कितना प्रार्थना कर रहे हो, चलते टाइम पे थोड़ा शांत हो जाते हैं, बातें करते हैं. That's how the morning walk started. He said, if you are praying too intensely, Swamiji, you reduce the intensity of your prayer. डॉक्टर को पता चला, वो उसको भी नाड़ी देखते हैं ना, मतलब या वो स्टेथोस्कोप रहता ना, भले ही वो मॉडर्न है मगर चेक वही करता है, वो स्टेथोस्कोप चेक करता है क्या चल क्या रहा है अंदर, अंदर वो ज्वालामुखी चल रहा है इंटेंसिटी का. तो प्रभुपाद की प्रार्थना से इस्कॉन चल रहा है, चलेगा, डूबेगा नहीं. लोग पूछते रहते पता नहीं क्या होगा, आज इतना झगड़ा करते हैं लोग मीटिंग में, क्या होता है. कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो. वो प्रार्थना करने वाला तो आपके झगड़े से ज्यादा तीव्रता है उसकी प्रार्थना, तो उसका इंटेंसिटी बड़ा है. दैट वन बॉय वाज देयर, बड़ा बेकार बैकग्राउंड था एकदम, मतलब आई कैन नॉट टेल हिज बैकग्राउंड. दारू पी के गटर में पड़ा रहता था 2004 में, 2003-4 में, ऐसा बुरा हालत था उसका. तो जैसे भी मैं अभी भगवान के आगे जाने के बाद बाकी भक्तों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, पहले से बताया था हमको, मगर समाओ पर उस बच्चे की वो भगवान के आगे आने के बाद है ना, कभी कभी इसका नाम भूल गया, कभी उसका नाम भूल गया, कभी इसका नाम भूल गया, होता था. मगर इसका नाम कभी भूलता नहीं था मैं. वही गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, when we go to Abhishek, we'll do prayers to all the people. I used to keep the list ready, इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना, इनके लिए प्रार्थना. मगर कभी कभी भूल जाता, कुछ भक्तों का नाम भूल जाता, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उनका नाम भूल जाता. मगर इस बच्चे का नाम मैं कभी नहीं भूलता था, क्योंकि वो बहुत बहुत पतित था, वो उसको उद्धार करना किसी का बस का काम नहीं था. वो अब सोचो, दारू पी के गटर में पड़ना कितना भयंकर इग्नोरेंस है ये. ऐसा हालत था उसका, स्टूडेंट था तो, और आया 4th ईयर में एंट्री मारा, अभी बचाने के लिए 365 दिन ही बच ज्यादा नहीं, ऐसा बच गया वो. मस्त दीक्षा हुआ, ब्रह्मचारी बना, सेटल हो गया, मंदिर में ज्वाइन हो गया, खुश हो गया एकदम, उसका जीवन मालामाल हो गया. फिर उसके पेरेंट्स का सुपर अपोजिशन था, वो भी चला गया, अभी वो भी भक्ति करना चालू कर दिया. बोले ठीक है भैया, रहने दो, तुम भी करो, हम भी करते हैं. तो बट आई वाज वंडरिंग, भाई इसके बारे में क्यों मेरे को ध्यान आता है बार बार. मैं मेरे लिए प्रार्थना, जो नॉर्मल दिन का दर्शन भी होता था ना,
आई यूज्ड टू प्रे फॉर माई सेल्फ एंड यूज्ड टू प्रे फॉर दिस बॉय। मेरे को पता नहीं चलता इसका भी याद क्यों आ रहा है मेरे को, मगर दो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पतित है ना उसका सबसे ज्यादा याद आएगा आपको। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, है ना? आप अगर वही आपका आईसीयू में डिवोटी रिलेटिव जो भी है वो है और अंतिम सांसें गिन रहा है बेचारा, तो भगवान के आगे जाके इसको भूल जाओगे क्या आप? और किसी को भूल जाओगे, आपके नेबर को किसी का फॉलोअप कर रहे तो वो शायद भूल जाओगे, मगर 10-15 दिन जो वेंटिलेटर पे रहेगा वो डिवोटी रिलेटिव, आप जैसे ही भगवान के आगे जाओगे आपको जरूर उसका याद आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बेकार हालत है उसको बचाना तो किसी का हाथ का काम नहीं। तो महाप्रभु के सिस्टम आप यहाँ पे आपको पता चलेगा हु इज मोस्ट क्वालिफाइड, हु इज मोस्ट फॉलन। वो नदाई जगाई मदाई के पीछे क्यों लग गए? अरे ये तो सबसे ज्यादा बीमार है, ये आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे गिन रहा है, अभी सांसें गिन रहा है, इसको तो बचाना जरूरी है। बाकी तो संभाल लेंगे थोड़ी देर के बाद, मगर ये तो मरने को टिक गया है, समथिंग लाइक दैट। वह गौर गोविंद महाराज का इसको बहुत स्पेशल प्रेजेंटेशन करते थे। व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन? हाँ, नो, योर डिस्क्वालिफिकेशन इज योर क्वालिफिकेशन। भगवान चैतन्य महाप्रभु तुमको क्यों बचाएंगे? क्यों बचाएंगे? क्योंकि फॉलन हो, इसलिए बचाएंगे। वो किस लिए आए? पतित पावन हेतु तव आवता। तो आपको बचाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पतित होना चाहिए। जबरदस्ती गिरना नहीं चाहिए। मैं दारू पीऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु मेरे को जल्दी बचाएंगे, दिस इज नॉट द पर्पज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस। नहीं, पर समझ में आना चाहिए पतित हूं मैं। इट्स नॉट दैट हमको लोगों को लगता है मैं तो पतित हो ही नहीं, मैं तो कितना अच्छा भक्त हूँ, मैं कहाँ पतित हूँ, मैं थोड़ी जगाई मदाई हूँ। और रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो महाप्रभु को बोलते हैं कि हम जगाई मदाई से भी पतित है। और वहां चैतन्य चरितामृत लिखता है, महाराज जब प्रेजेंटेशन देते हैं, ऑर्डिनरी भक्त को लगता है मैं हूँ पतित, मैं जगाई मदाई इतना मैं पतित नहीं हूँ, है कि नहीं? ऐसा हमारा कंसेप्ट रहता है। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? हम तो जगाई मदाई से भी पतित है। वो तो बहुत अच्छे हैं, महाभागवत है, वो बहुत अच्छे भक्त है, उनको नवद्वीप में जन्म मिला, आपका दर्शन मिला, आपकी कृपा मिला, आपका लीला देखा उन्होंने। हमने क्या, हम तो पतित है कि नहीं? सो वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं, उनको डायलॉग लिख के नहीं दिया है जाके महाप्रभु के आगे ये बोलो, एक ड्रामा के डायलॉग्स नहीं है उनके। वो उनको पता है कि मैं पतित हूँ, पतित है कि नहीं? मगर भक्ति में नहीं आता था, कोई मेरे को बचाता नहीं था, मैं कोई प्रार्थना नहीं करता तो मैं पतित ही रहता था। तो पतित ही है, तो महाप्रभु उसको बचाने के लिए आए हैं। सो एक्चुअली गोविंद महाराज यूज इलैबोरेट प्रेजेंटेशन। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? योर क्वालिफिकेशन इज योर डिस्क्वालिफिकेशन, because you are not qualified to get the mercy of the Lord, that's why Lord will give you mercy, because you cannot get mercy. So this is very beautiful and to the extent, अभी देखो कितना तृणात अभी सुनिचेना तरो, कितना डिफिकल्ट काम है। कब से 20 साल 40-25 साल नहीं, 1988 कितना हो गया, 45 years हो गया, वही लेक्चर, वही तृणात अभी क्यों तरो पे क्यों सहिष्णुराम, क्योंकि जो पतित है ना उसको पता है भैया मैं तो बहुत फॉलन हूँ, तो अपने आप नम्र बन जाएगा, अपने आप टॉलरेंट बन जाएगा, अपने आप अच्छा भक्ति बन जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर, वी शुड प्रे टू अदर डिवोटीज ऑल्सो एंड सच ब्यूटिफुल हार्ट। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस purport goes, we'll try to describe that next time. When the heart is filled with such joy of Krishna consciousness, then the chanting, hearing, kirtan and all, we derive unlimited pleasure in that. Do we derive unlimited pleasure in that now? Not now, we are struggling. Sometimes we derive also. There must be some days of your life where you must have been floating in the ocean of Krishna consciousness. मजा आ रहा होगा वो, फीस खा के भी आता है वो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आता है स्पिरिचुअल एक्सटेसी क्या है, मटेरियल एक्सटेसी क्या है। This is what is saying in the purport. He is enjoying chanting, hearing about Krishna, chanting about Krishna, dancing in the kirtan, and all the transcendental activities related to Krishna. He enjoys that in a great bliss.
This is agony. If I eat 10 malpuas, that is not spiritual ecstasy. You can see after 1 hour what is how much ecstasy remains. it just comes to neutral, गाड़ी zero हो जाती, बढ़ते नहीं ना आगे रुकती नहीं. So this is very important. One devotee should learn to in that anya bilashita shunyam, when we are not supposed to pray to the Lord. There are many things, but there are some few things which are should be done, prayed, and in that is the prayers for the others, which is a very important aspect of our devotion service. The remaining part we'll see next time. Thank you very much. Shri Prabhupada ki jai, Granth Srimad Bhagavad Mahapuran ki jai. Yes, Prabhu, you want to share something? If you want to share something, you can share. Hare Krishna, Ashish Prabhu. Take away, and dear. Thank you so much. We'll meet next Saturday morning, 8